Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thottam and with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। आर्थिक खबरों की बारीकियों पर भी हम चर्चा करते हैं और बारीकियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। यामिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Equity benchmarks hit new closing peaks for third day in a row. Sensex closes at 39,750. Nifty ends at 11,929. Rupee weakens 18 paise against the US dollar and gold prices surged to 32,870 rupees per 10 grams at Delhi's bullion market. भारतीय शेयर बाजारों ने आज नई ऊंचाई हासिल की। सेंसेक्स 39,750 और निफ्टी 11,929 पर रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे कमजोर हुआ और सोने की कीमत 100 रुपए की बढ़त के साथ दिल्ली सर्राफा बाजार में 32,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिकी। भारतीय शेयर बाजारों ने आज नई ऊंचाई हासिल की। मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में वापस में आने की वजह से शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66 अंक की बढ़त के साथ 39,750 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली 4 अंक की बढ़त के साथ एक नई ऊंचाई 11,929 पर रहा। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मामूली बढ़ोतरी देखी गई। Equity benchmark Sensex and Nifty today scaled new closing peaks for the third day in a row, riding on optimism that the re-election of the BJP-led NDA will push reforms, even as high volatility during the session reflected a cautious investor outlook in view of tepid global cues. In a highly volatile trade, the BSE gauge Sensex closed 66 points or 0.17% higher at 39,750, which was its all-time closing high, while the NSE benchmark Nifty logged a marginal rise of 4 points or 0.03% to settle at 11,929, a new closing peak for the index. Among secondary barometers, the BSE mid-cap index rose 0.09% and the small-cap index rose 0.41%. The market breadth indicating the overall health of the market was positive. On BSE, 1,438 shares rose and 1,169 shares fell. A total of 154 shares were unchanged. A renewed sense of positivity has been dictating domestic bourses ever since the BJP scored a landslide win in the national election. But investors have slowly turned their focus to other global and domestic factors like trade tariff tussle, macroeconomic data and onset of the monsoon, among others. Besides, sustained foreign inflows also helped in lifting market sentiment. Heavyweights Reliance Industries, TCS and HDFC Bank saved the day for the benchmark BSE index. In percentage terms, however, Yes Bank was the biggest gainer in the Sensex pack, rallying 4.1%. Other top gainers were Coal India, Infosys, Power Grid, Vedanta, Reliance, TCS, HUL, ONGC, HCL Tech, IndusInd Bank, HDFC Bank and Asian Paints gaining up to 2.7%. On the other hand, Hero MotoCorp, Bajaj Auto, Bharti Airtel, L&T, Bajaj Finance, M&M, Tata Steel, HDFC, Kotak Bank and ITC were the major laggards, shedding up to 2.6%. Of the Sensex constituents, 13 stocks registered gains and 17 saw losses. Sectorally, BSE Tech, Energy, Metal, Oil and Gas, Utilities and Power indices gained up to 1.64%, while BSE Telecom, Capital Goods, Auto,
Industrials and finance indices ended up to 1.6% lower. Among the 19 BSE sectoral indices, 10 closed in the green and 9 in the red. और रुपए की भी हम बात कर लें. रुपया डॉलर के मुकाबले आज 18 पैसे कमजोर हुआ है. $1 की कीमत 69 रुपए 69 पैसे रही है. And before we go on with the next news that we have in hand, can you just give us your opinion about this 3-day in a row excellent performance, if we can put it that way, of the Sensex? Well, if we understand that the investors have actually looked at the election results as a very positive sign for the economic growth of the economy. The macroeconomic fundamentals have been already very strong with the actions of the previous government, whereby we are seeing a growth rate of 7.4% and we are seeing 400 billion foreign exchange reserves. Rupee largely stable around 68, 69, which is there. And we are also seeing the fiscal deficit being maintained at 3.4%. So overall, the activities of the government in terms of its fiscal expenditures or fiscal prudence as well have been taking care of the macroeconomic fundamentals, which most of the investors believe will be taken forward. The reforms like GST and the demonetization has also helped the economy. Besides the financial inclusion reforms which the government has brought about, whether it is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana or the other financial products at a lower cost, have also allowed more people to become a part of the economic development and growth, which people see will propel the GDP growth rate in the economy and will give boost to the industry as well. Different other Bankruptcy and Insolvency Act is also likely to take care of the NPA problems. So all these factors have been taken in the positive stride, taking the economy forward in best of the reforms. Thank you, Yamini. Now, before we go ahead with giving you questions, we've got Arvind Pruthi, who's just joined us online. He's consultant and advisor with Abhira Securities and a stocks expert. Welcome to the program, Arvind. You're joined, I'm here, I'm Paul Thottam and Harsh Ranjan in the studio, and we've got Yamini as our expert in studio. You've just heard the news that we read out of the stock markets, and you know that it's done 3 days in a row, a very good performance. Some call it euphoria. I don't know, what would you like to call it? So I put that question to you. Can you tell our listeners, as a stock expert, what do you think is going on in the stock markets? There are a lot of expectations post the election results. There are a lot of expectations from the market. Having said that, but I feel the earnings have not been in tandem with the stock prices, and I would term that markets have run quite a bit ahead of the fundamentals. I feel the markets markets should take a breather, and thereafter, one could see how the things pan out, because right now, too much of the rise in the market, I would term it as, on expectations. Now, that said apart, even if I believe, and everybody believes that the Modi government is going to perform, but that performance will take time to get translated on the ground level. So I feel, yes, the markets have to run ahead of fundamentals, and they need to take a breather at this point of time. बिल्कुल. और अरविंद, अगर आप देखें आज भी जैसा आप एनालिसिस कर रहे थे, 30 पैक सेंसेक्स में 17 शेयर जो हैं उनमें गिरावट हुई है, 13 शेयर में ही ठीक ठाक उछाल रहा है, जिसकी वजह से ये न्यू पीक है. खैर 40,000 का पॉइंट तो बहुत दूर नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या आपको लग रहा है कि विद इन अ वीक और 2 इसमें कोई करेक्शन आएगा और ये थोड़ा नीचे जाके फिर स्टेबल करेगा? Corrections will not, the markets will, you can't anticipate when the correction will come. Yeah. But the way the markets have run up, I feel it is very healthy for the markets to correct, so that, some people book profits, the money on the sidelines, the new money that comes in the market. So I feel correction is imminent, and it would be healthy for the market participants on an overall basis. Arvind, if you look at now, the time is ripe for the budgets to be coming into action, and then you have the RBI policy with the upcoming effects on the stock. Can you tell me, what is your opinion? How do you think is the RBI going to outline its policies so that the stock markets keep this kind of tandem going on?
I think there's a lot of concern in the markets about the growth opportunities and the liquidity crisis in the market at this point of time. I think that RBI will definitely come up with something or the other. I don't see, a rate cut immediately at this point of time. But I see, some kind of interim measures by the RBI that will help boost the market with the liquidity at this point of time. And what about the FPI prospects in the coming days? What is your call on that? Pardon me? The FPI prospects in the coming days with I think, yes, overall the investors are positive about the Indian story, and also the election results. There have been, a reaffirmation of the FIIs also, and, overall a comfort with that the reforms will have a continuity and they won't take a breather. I think that will continue, but again, it will be sector specific, and how we perform and how, if there are any, stops for them in the budgets, that will again, be a very determining factor in the coming days. So Arvind, in between all this positivity, let me just throw in a little bit of a dampener to balance it out. With the oil prices probably going up or fluctuating all the time, and then you have the US-China trade war still, and you have Iran who's jumped into the fray now in these wars. Can you tell us what is your opinion now that the markets euphoria probably is going out, but in the coming days, how do you think it's going to pan out, all these other global issues? See, I feel that, so far there has not been a very major impact on the Indian markets, on the Indian industry because of the US-China trade wars. In fact, I would say that it is an opportunity that probably if we can, make out of this on the Make in India slogan that we've been very positive about. So, we should try to, build upon that, keeping in mind that there is, some kind of a China-US trade war over there. Having said that, I think markets are very dynamic, and I think the high oil prices and everything is being factored today in these stock market prices. Yes, any kind of a sudden breakout of the oil prices, which is something nobody is anticipating, would be a very big damper. But all said and done, I think the markets have anticipated that oil prices would remain at these levels. I think 65 to 70 is the range where I feel markets would be able to absorb that kind of oil prices. Okay, thank you, Mr. Arvind Pruthi. It was Arvind Pruthi, जो कंसल्टेंट और एडवाइज़र हैं अबीरा सिक्योरिटीज़ के साथ. आपने मार्केट मंच से जुड़कर जो जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शेयर मार्केट पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. जैसा कि आपने यामिनी अभी अरविंद को सुना, आम निवेशकों के लिए वो कह रहे थे कि जैसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन ले, और ये करेक्शन अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसमें कई लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ नए स्टॉक्स लोग खरीदेंगे, तो बाइंग भी होगी. तो ऐसे में जो आम निवेशक हैं, जो मार्केट मंत्रा हमेशा ये आम निवेशकों के लिए सुझाव देता है, ट्रेडर्स के लिए शायद उतना नहीं, लेकिन आम निवेशकों के लिए हम ज़्यादा सुझाव लेकर आते हैं. उनके लिए क्या है, अभी मार्केट जो चढ़ा हुआ है इसमें क्या उन्हें अपने स्टॉक्स को बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और फिर जब थोड़ा करेक्शन हो जाए तो ऐसे में मार्केट में फिर एंटर होना चाहिए, बने रहना चाहिए. जी देखिए, जो अभी स्टॉक मार्केट्स बढ़ रहा है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट थोड़ा कंटिन्यू करेगा जब तक ऑयल की प्राइसेस उसे डैम्पन नहीं करती. अगर निवेशक अभी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो एक अच्छा समय होगा प्रॉफिट्स बुक करने के लिए. करेक्शंस आ सकती हैं खासतौर पे जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, और कुछ करेक्शंस, क्योंकि कभी कभार कुछ स्टॉक्स एकदम से तेज़ी पकड़ते हैं तो उनके अंदर भी करेक्शंस नज़र आती हैं जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उस दौरान आप खरीद सकते हैं और अभी के समय बेच सकते हैं. ज़्यादातर जो परचेजेस अभी स्टॉक मार्केट में की जाएंगी वो उम्मीद नहीं है कि इसी लेवल पे रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है स्टॉक मार्केट इससे नीचे स्तर पे हो. बिल्कुल. और जैसा कि आज ही हम देखें तो येस बैंकिंग स्टॉक्स में आज ठीक ठाक बढ़ोतरी रही है. येस बैंक में काफ़ी ज़्यादा रही है, 4.1% रहा है, और एक तरीके से कहें कि येस बैंक 30 पैक में है तो इसने सेंसेक्स को बढ़ाया है. साथ ही HDFC बैंक और एशियन पेंट्स में भी 2.5% से ज़्यादा की बढ़त रही है. तो सेक्टोरली अगर बात करें तो अभी खरीदने के ख्याल से
बैंकिंग को लोग कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपका टेन्योर ज्यादा है, जो टाइम होराइजन है वो थोड़ा सा ज्यादा रखें, 3 साल 4 साल, तो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? बैंकिंग सेक्टर में अभी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि आरबीआई अपने जो 10 बिगेस्ट डिफॉल्टर्स हैं उसकी लिस्ट जारी कर सकती है, जो 25% एनपीएस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंकिंग में। अगर ऐसा होता है या फिर उनको जो है आईबीसी में रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकती है, जिसका असर बैंकों पे पड़ेगा। और बैंकिंग में निवेश, बैंकिंग के स्टॉक्स एनपीएस की वजह से काफ़ी अंडर वैल्यूड रहे हैं, तो उसमें निवेश एक अच्छा रहेगा। खासतौर पे कुछ बैंक्स जिनके बारे में थोड़ी खराब खबरें आई हैं पीछे, उनके स्टॉक्स काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं, तो उनमें भी अगर निवेश करते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे, अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एक गिरावट सी आ गई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं उभरी है। आज बढ़ते बाजार में भी आप देखें हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ऑटो के शेयर नीचे ही गिरे हैं। जी, ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल या टू व्हीलर्स या किसी भी सेगमेंट को, आप जो कंज्यूमर गुड्स के सेगमेंट्स को देख रहे हैं, इसमें जो गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि अभी इनके जो सेल्स है वो इतनी बढ़ोतरी पे नहीं है जितना आपका जीडीपी ग्रोथ है। इसका कारण मुख्य ये रहा है कि बैंक्स जो लोन है वो उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसकी वजह से लोगों के पास आसान लोन की सुविधा नहीं है और वो ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स या और चीज़ों पे खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह हो सकती है क्योंकि डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ने के बाद, हालांकि वो बड़े डिफॉल्टर्स थे, कार खरीदने वाले छोटे छोटे लोन टेकर्स होते हैं, लेकिन बैंकों ने काफी सख्ती कर दी है। पहले 100% ऑन रोड जो कीमत होती थी गाड़ियों की, उस कीमत को वो लोन के तौर पर दे देते थे। अब जो एक शोरूम कीमत हो रही है शायद उसका भी 80% दे रहे हैं, तो एक तो कम किया है और कागजी जो कार्रवाई है उसको भी सख्त कर दिया है, सख्त किया है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी ऑटोमोबाइल में डिमांड की कमी आई है, जिसकी वजह से इसके शेयर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आम निवेशकों के लिए फिर मैं वही सवाल पूछूंगा, राय आपकी वही होगी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बने हुए हैं वो बने रहे। अभी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है और उसमें अगर आप बने रहें तो वो अच्छा ही रहेगा। स्टॉक मार्केट आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, कम घटेगी नहीं। ऑयल की वजह से करेक्शंस हो सकती हैं कि जो है स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी गिरावट नजर आए, पर अदरवाइज जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो इकोनॉमी का काफी स्ट्रांग है और बढ़ोतरी की तरफ ही ले जा रहा है। बिल्कुल यामिनी, अब देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट का क्या हाल रहा। पहले बात करेंगे एशियाई और यूरोपीय बाजारों की। अमेरिका और जापान के बीच जारी व्यापार वार्ता के मद्देनजर एशियाई बाजारों में आज बढ़त देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच व्यापार संबंधी वार्ता हुई है। इसके बाद जापान का निकेई सूचकांक और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.44% की तेजी देखी गई। सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स कल के स्तर पर ही बना रहा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की तेजी रही। दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी 0.2% आज बढ़ा है। इधर यूरोपीय बाजारों में लगभग कल का ही स्तर बना हुआ है। केवल लंदन का FTSE 100 0.3% की बढ़त पर अभी दिन के कारोबार के समय काम कर रहा है। The US markets remain closed today on account of Memorial Day, a federal holiday which is observed in honor of those soldiers who died in military service for the United States. This day is observed on the last Monday of May every year. And now I have a question for you, Yamini. We've got the gold. I was reading a story, and I'm pretty sure that you've looked at it too, that a very strong member of the World Bank, and is a financer too, is planning to invest about $35 million into a gold for cash, a loan company which is in India. And they feel that this is the time to encourage the amount of gold that people have in reserves, so that they come forward and take loans against that gold. What is your opinion? How does it shift the economics from the basic methods of financing? Well, if you look at an Indian perspective, we've always seen that people invest in gold heavily, primarily because it was considered to be one of the most liquid and safe investments. And it has also been seen that the gold has been continuously rising.
Gold also has a very emotional attachment with most of the Indians, whereby people don't want to sell gold or don't want to really mortgage gold, primarily because it's believed that it is only at the time when you have nothing to sell or you are at the verge of bankruptcy or your situations are extremely bad that you actually sell or mortgage gold. So the fundamental idea of actually putting gold and getting cash has not seeped in so much in the psychology of the Indians as such. However, for businesses and other activities, people have tried to take loans which are available at a better interest rates for themselves, and they are exploring the options of mortgaging gold and taking cash for their businesses or other activities, and they believe they can get back their gold after a certain period of time. So let's say not a very major impetus, but if the change in the attitude comes in that gold is not needed so much, which is much a closer idea which the younger generation has as against an older generation, because the older generation still believes it's a more safety oriented option, and it has a more emotional appeal to the older generation than to the younger generation. Yeah, and it's a $3 trillion business, of which only about 5% has been in cash till today. That comes to another question, which is the NBFCs have been taking a major hit throughout for now. So do you think that this kind of investments, which is good, that's coming into the country, but do you think that it will uplift the mood of the NBFC? Well, NBFCs have been suffering a lot with the liquidity problem, ILFS and the others which we talk about, and they have been looking at different investors who can possibly provide in the requisite liquidity to the market. And if there are different investors who come into the market, there will automatically be a better situation in the overall market. And the RBI would also not be so stressed in providing the necessary liquidity to the NBFCs. So it will definitely ease out the situation which is there, and would also build in more confidence for the investors that are there. और अब शायद हमें इंतज़ार ये करना पड़े कि जो फुल बजट पेश होगा, नई मोदी सरकार जो है, दूसरे टर्म की जो मोदी सरकार है, वो किस तरीके से इस बजट को लाती है, आरबीआई पॉलिसीज़ को भी उसमें उस तरीके से शामिल किया जाएगा, आगे क्या होता है। गोल्ड की भी आप चर्चा कर रहे थे, गोल्ड के प्राइस पहले हम बता दें कि आज दिल्ली सर्राफा बाजार में क्या रहा, उसके बाद सोने पर सवाल। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में आज 100 रुपए की बढ़त रही है। 10 ग्राम सोना 32,870 रुपए में बिका। चांदी की कीमत भी 50 रुपए बढ़ी है। 1 किलो चांदी 37,550 रुपए में बिकी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत कम हुई है। प्रति आउंस सोना $1,284 और प्रति आउंस चांदी $14.57 में बिक रहा है। और जब सोने पे जो हम सवाल यानी आपसे पूछने वाले थे वो ये कि अभी भी जैसे आपने बताया कि गोल्ड के साथ एक अटैचमेंट है, एक इमोशनल टच है इंडियंस का, और भी कई देशों में इस तरीके के, क्योंकि उसको आप पहनते हैं, सजते हैं उससे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें, क्योंकि सोने में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, तो सोने में एक तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना ही चाहे तो उसके क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं, और कितना अच्छा है सोने में इन्वेस्ट करना भी? जी, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट एवेन्यूज़ में जाए या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में जाए। तो रियल एस्टेट है, जैसे गोल्ड है, आपके स्टॉक मार्केट्स हैं, आपके स्टॉक मार्केट्स में इक्विटी है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर देखी जाती है। कुछ प्रतिशत जो आपकी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है उस तक अगर आप गोल्ड इन्वेस्ट करें तो वो एक अच्छा माना जाएगा, पर अगर आप उससे ज़्यादा बियॉन्ड करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन आजकल नहीं माना जाता, क्योंकि माना जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में या आप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करें तो आप अपने बच्चे के लिए या आप अपने लिए आगे फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए उसको ऐसे सेव कर सकते हैं कि वो आपके को पैसा दे रिटायरमेंट के टाइम पे, या आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए, या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। सिमिलरली इंश्योरेंसेज होते हैं, उसको भी लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और आपकी उम्र को देखते हुए, आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव होती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता जब तक आप उसको मॉर्टगेज करने की ना सोचें। बिल्कुल, कुल मिलाकर यामिनी की राय ये है कि जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, दूसरे जरिए जो हैं इन्वेस्टमेंट के, उनके मुकाबले गोल्ड में इन्वेस्ट करना थोड़ा कमजोर साबित हो सकता है। फिर भी अगर करें तो गोल्ड खरीद के तो बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करें, गोल्ड ETF में जरूर आप कर सकते हैं। हाँ जी। So that brings me to one question here, that everybody, all experts say that investment in gold is a dead investment.
Right. Now, you said that realty is a sector. Yes, it used to give a lot of returns, but that doesn't happen anymore. So now you're left with stock markets, I suppose, for a general investor. Then doesn't gold look very lucrative? Well, there is something called safety, which is very important for a lot of people, as well as security. So when we talk about investment in real estate and when we talk about investment in gold, they actually meet out these two important requirements of safety and security. So when people are investing in real estate for, let's say, their own house, or let's say other investments, they're seeing them as secure investments, and let's say a long-term investment that if I keep it today for about 5 years or 10 years later, it will actually pick up at a very fast pace and will give me returns. So a lot of people, when they have excess cash, they invest in real estate or they invest in gold. But real estate requires a huge amount of money. So a lot of people don't have that money, and obviously stock markets appear to be a better option in making those investments. Stock markets are more risky because they every day are extremely volatile. So a lot of people don't want to invest, and if they don't have the knowledge of how the stocks move up or how the stocks move down or which particular fundamental stocks should be taken, then they can actually prove to be a complete loss. Unlike gold or real estate, where people who do not even have knowledge can actually make investment and believe that after a certain period of time, since they're always gaining money, they will actually give them some returns. So we're talking about returns and rupee value. Let me just take the rupee story again. The rupee today declined by 18 paise to close at 69 rupees and 69 paise against the US currency, weighed down by month-end dollar demand from importers and rising crude oil prices. Forex traders said that weakened Asian currencies also added to the pressure on the domestic unit. However, gains in domestic equities supported the rupee and capped its losses to some extent. Can you just briefly tell us, how do you think that rupee is performing, and does it look really volatile in the coming days? Well, the rupee is likely to be stable because of the macroeconomic indicators, but what it can make it unstable is the oil prices. So if the OPEC cuts its supply and we have problems in importing from Iran, and there are other problems which might be associated in our getting oil at a higher price, then automatically, because our current account deficits would be immediately affected, the rupee may suffer depreciation. But because the macroeconomic fundamentals, whether it's economic growth, whether it's fiscal deficit, whether it is foreign exchange reserves, or whether it's even the entire outlook of the country vis-a-vis other countries is actually good, that keeps the rupee more or less stable. And if the government has to concentrate on exports, then in that case our rupee is going to create a little bit of a hurdle, isn't it? Well, it's believed that we've not been a very export-oriented economy, though it has helped us maintain our balance of payments. But all experts such as yourself say that now 2.0, which is government 2.0, should concentrate on exports. Well, the world markets have not completely recovered, and they don't have too much of money for extending too much of exports, and there is a drive which is going on in the international markets to curb international or globalization which is there, and as a result we may not be able to penetrate into more markets. So it is best to concentrate on our domestic markets which are there. Also look at potential unique export-oriented areas. Okay, then now let's look at the oil prices. Oil prices were mixed today amid supply cuts led by producer club OPEC, and US sanctions on fuel exports from Iran and Venezuela supported crude, while concerns about an economic slowdown weighed on the market. Brent crude futures were trading around $68.70, while US crude futures were at $59.20 a barrel. Quickly, if you could just tell us, how do you see the oil sector performing? I mean, do you see any concerns major? No, they don't seem to be having a major concern, but yes, oil prices are the major concerns which are there. आज के लिए बस इतना ही, वक्त का तकाजा है, हम कार्यक्रम को यहाँ खत्म करें। यामिनी, आप हमारे साथ बैठी, स्टूडियो में बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you, Yamini. Before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks hit new closing peaks for third day in a row. Sensex closes at 39,750. Nifty ends at 11,929. Rupee weakens 18 paise against the US dollar, and gold prices surged to 32,870 rupees per 10 grams at Delhi's bullion market. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. नमस्कार।